Hello students. Hello, welcome to Krishnas Maths. आज आ गोटे MCQ सीरीज नहीं आस काली गोटे अपलोड होता आज आ गोटे प्रीमियर हम सेटा भी देखीदे तापर ये दुईटा MCQ सीरीज पर आम बहुत गुड़े MCQ सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर सारे 2019, 20, 21 है ना तापर आमर गोटे 100+ MCQ सीरीज गोटे अपलोड हो सारी सब कृष्णास मैथ्स अवेलेबल या पर आम जा टॉपिक वाइज रिवीजन टॉपिक वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रो पूरा टॉपिक वाइज रिवीजन हो आम फर्स्ट रे कैलकुलस रो स्टार्ट करबा स्टार्टिंग विथ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी फॉलोड बाय एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देन फॉलोड बाय इंटीग्रेशन इंडेफिनाइट डेफिनाइट देन वेक्टर्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फॉलोड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन देन वेक्टर्स देन 3D एमती है कि हम आसबा इजी इजी चैप्टर आम लास्ट रे करबा जेमते डिटरमिनेंट हे गेला मैट्रिसेस हे गेला ट्रिगो फंक्शन तो बेसी किछि नाही तुम मन पाए ओनली प्रिंसिपल वैल्यू प्रॉब्लम अच्छी तो एगुड़ा पे आम लास्ट रे आसबा जोड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक जोटी पिला बेसी डाउट रहे जेमती कैलकुलस हे गेला हां कैलकुलस हे गेला वेक्टर 3D हे गेला एगुड़ा हम दिन को गोटे चैप्टर में रिवाइज कर चलिबा टिल द एग्जाम मो साथी रहिबे आ गोटिए काम करिवे वीडियो को जेते ही परियो शेयर करिवे शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन and raise your support towards Krishna's Maths so that I will be able to help you at my best. So we'll start the video with a positive note. Question number 1. All are MCQ questions like yesterday. This is question number 1. Is A star B equal to A square plus B square on n? And what is n? Set of natural numbers. Is A star B equal to A square plus B square on n is a binary operation? Yes, it's a binary operation since A comma B belongs to n. If A and B are belongs to n, then A square plus B square also will belongs to n, and hence it's a binary operation. So the answer is yes. Now, if theta equal to sin inverse x range कौन होची minus pi by 2 ru plus pi by 2 है ना cot inverse range कौन होची 0 to pi tan inverse range होची minus pi by 2 to plus pi by 2 open interval and x greater than 0. For everything x is greater than then the smallest interval सब intersection of all the three intervals will give you 0 to pi by 2 will give you 0 to pi by 2 okay so this is your answer the smallest interval in which all the three functions are defined जेतेबेले तीनटा फंक्शन रहेगा f1 plus f2 plus f2 more than one function addition difference multiplication or division either it is f1 plus f2 or f1 minus f2 or f1 into f2 or f1 divided by f2 provided f2 should not be equal to 0 for all those four functions जदि limiting interval पचारला domain पचारला smallest interval मतलब कौन होची domain होची जोटी सब डिफाइन माने यार domain जदि d1 यार domain जदि d2 if the domain of f1 is d1 and the domain of f2 is d2 for all these four functions the total domain will be d1 intersection d2 so for more than one function सब अलग अलग domain बाहर करिए सब intersection नहीं जो तो यार intersection निकला है चलो next question if A is a 3x3 matrix and determinant of A equal to 2 what about A into adjoint A what the property is A into adjoint A equal to determinant of A into I this is the property very very important property so determinant of A into I so determinant of A is given as 2 and I is your 1 0 0 0 1 0 3x3 matrix likhe so when you multiply this now the diagonal elements will become 2 and remaining all will be 0 so this is what your answer is बहुत easy thila construct a 2x3 matrix 2x3 माने दुईटी रो और तीनटी कॉलम now let us construct that so this will be a11 a12 a13 and a21 a22 a22 now I minus j elements are here a element है I रो value 1 j रो value 1 so I minus j will be 1 minus 1 that is 0 1 minus 2 minus 1 1 minus 3 minus 2 2 minus 1 is 1 2 minus 2 will be 0 2 minus 3 will be minus 1 and this is the required matrix बुझेला चलो नेक्स्ट राइट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ x माने एटा को u कंसीडर कर दो और एटा v एटी कौन करिवे x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करिवे पुट x इज इक्वल टू
tan theta. So theta will be equal to tan inverse of x. So u is equal to tan inverse of 1 plus tan square theta square root minus 1 divided by x, which is tan theta. Simplify karo chalo. So tan inverse of 1 plus tan square theta will be sec square theta, and root of sec square theta will be sec theta. Sec theta minus 1 divided by tan theta. Now let us convert this into sine and cos. So this will be tan inverse of cos sec theta can be written as 1 upon cos theta minus 1 divided by tan theta, which is sine theta divided by cos theta. So when you further simplify this, what you are going to get is tan inverse of eta iti padela 1 minus cos theta. LCM mu lekhuni kaina LCM duita jagara same, so it will get cancelled. So this is equal to tan inverse of 1 minus cos theta will be 2 sine square theta by 2 divided by sine theta will be 2 sine theta by 2 into cos theta by 2. So 1 sine theta will get cancelled. So tan inverse of tan theta by 2, which will give you theta by 2. And what is theta? Theta equal to tan inverse x. So this is 1 by 2 into tan inverse of x. This is u. This is u. And du by dx is equal to half into derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. And dv by dx is equal to tan inverse x derivative 1 by 1 plus x square. We need the ratio of these two. So this term and this term. A duita term cancel and the answer will be 1 upon 2. So 1 upon 2 is your answer. This is your answer. Understood? Bujhiwala? Chal, this is your next question. One more question. Write the absolute maximum and absolute minimum value of the function f of x is equal to mod x divided by mod x between minus 2 to 2. So mod x will be either plus x or minus x. So when it is plus x, when x is more than 0. And this is equal to 1. And if x is less than 0, x upon minus x, which is equal to minus 1. So absolute maximum is 1 and absolute minimum is minus 1. Only those two values will exist. ऊपर x अच्छे तले mod x अच्छे. Mod x रो वैल्यू कौन है जो? Either plus x है जो और minus x है जो. जितने plus x है जो cancel है कि 1 है गला. जितने minus x जो cancel है कि minus 1 है गला. ठीक है जी. Now the greatest integer function of cos x. देखो greatest integer function भीतर कौन अच्छे? Cos x अच्छे. जितने x को 0 put करिए cos 0 है गला. Cos 0 will be equal to 1 and the greatest integer of 1 will be equal to 1. And जितने pi by 2 put करिए, so this is cos of pi by 2 and cos pi by 2 will be equal to greatest 0 and greatest integer of 0 will be 0. ठीक है जी. तो 0 to 1 भीतर रहे. इंटरवल टा कोड रहला 0 to 1 भीतर. जदि 0 to 1 भीतर रहिबो तो greatest integer कौन होगला? Any value between 0 to 1. Any value between 0 to 1. The greatest integer will give you 0. जो इंटरवल रा फंक्शन टा डिफाइंड हो से इंटरवल रा लोअर इंटरवल. So interval to lower limit will be the answer. So lower limit kate hegla 0 hegla. So 0 will be your answer. Now write the general solution of dy by dx equal to cos x minus x. What is given? Ki dy by dx is equal to cos x minus x. So what about dy? Dy equal to cos x minus x into dx. So integration of dy will be y. Integration of cos x will be equal to sin x. Integration of x will be equal to x square by 2 plus c. So this is your general solution. It is general solution. What is the projection of A on B? So projection of A on B is nothing but A dot B divided by magnitude of B. This is the formula. Projection of A bar on B bar is A dot B divided by magnitude of B. So what is A dot B? A dot B is 1 into 2. 1 into 2 will be 2. 0 coefficient 1, 0 coefficient 2. 1 into 2 will be 1 more 2. Minus 1 into minus 1 will be equal to plus 1. Divided by magnitude of B. B ro magnitude I ro coefficient 2, 2 ro square. 0 coefficient 2, 2 ro square. K ro coefficient minus 1 yara square or root. Numerator is 5. Denominator root 9, which is equal to 3. And that is your answer. Write the distance of the point 1, 1, 2 from x-axis.
Distance from x-axis is square root of y square plus z square. Remember the formula. Distance from x-axis is this. So what is y coordinate? 1, square of 1. What is z coordinate? 2, square of 2. So 2 square is 5, 1 square is 1. So this will be equal to root 5. Distance from x-axis is represented by root of y square plus z square. So square of y coordinate plus square of z coordinate. So this is one question and this is one more question. Next one. If adjoint of A, determinant of adjoint of A equal to 64, which is equal to determinant A ka square equal to 64, and determinant of A is equal to 64 ro square root, and that is equal to plus minus 8. Plus minus 8. This is one more question. कौन दिया है? Adjoint of determinant of A. Determinant of adjoint of A equal to determinant of A the whole square. ठीक है. Now केमती evaluate करिए? Normal expansion कर दिए. हाँ? Sin square theta into 2 sin square theta minus 12. So this is 2 sin square theta minus 12 minus cos square theta into 2 cos square theta eta, right? 2 cos square theta plus 10 and plus 1 into 12 cos square theta plus 10 sin square theta. So 2 into sin raised to 4 theta minus 12 into sin square theta minus 2 into cos raised to 4 theta, right? Minus 10 into cos square theta plus 12 into cos square theta plus 10 into sin square theta. 2 sin raised to 4 theta minus 2 cos raised to 4 theta. This is equal to 2 sin raised to 4 theta minus 2 cos raised to 4 theta. Now minus 12 sin square plus 10 sin square is minus 2 sin square. Minus 2 sin square theta. Minus 10 plus 12 is plus 2 cos square theta. So take 2 outside. 2 को बाहर निकले. This will be sin raised to 4 theta plus cos raised to minus sin raised to 4 minus cos raised to 4 theta minus sin square theta plus cos square theta. So this is equal to 2 into, so out of these two, a square minus b square na, so sin square theta plus cos square theta into sin square theta minus cos square theta minus sin square theta plus cos square theta. Sin square plus cos square is 1. So 2 into 1 into this will be only sin square theta minus cos square theta minus sin square theta plus cos square theta. Sin square cos square. So 2 into 0 will be equal to 0. मिलेगा आंसर. ठीक है, कष्ट करेगा बोला किंतु मिलेगा. वो बोलते हैं ना कोशिश करने वाले की हार नहीं होती. लेट हो सकता है, हार नहीं होती. हाँ, तो कोशिश करते रहना, जरूर जीतोगे. फिर गाना गाने का. हाँ, कौन सा वाला? हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफरेंशिएबल फंक्शन f defined for all x greater than 0 satisfies f of x square. So this is what the condition the function satisfies. F of x square equal to x cube for all x greater than 0. What is the value of f dash 16? So look, differentiating both sides with respect to x. So this will be f dash x square into f of x square, f dash x square into derivative of x square is 2x, x cube equal to 3x square. 1x will get cancelled. So f dash of x square into 2 equal to 3x, or f dash of x square equal to 3x by 2. Now put x square equal to 16. Put x square equal to 16. So x will be equal to plus or minus 4. So when x is equal to 4, f dash of 16 equal to 3 by 2 into this will be plus or minus 4. So this is 2. This will be plus or minus 6. So f dash 16 will be equal to plus or minus 6. देखो 80 पर्यंत तो करिके पड़ा आसलो. तापर देखो f dash 16 वैल्यू दिस केमते यूज करियो. x स्क्वायर को 16 करियो. x स्क्वायर को कोन करियो 16. जेतले x स्क्वायर को 16 करियो माने x को कोन करियो प्लस और माइनस 4 करियो. तो x स्क्वायर जगह रे कोन लिखबे प्लस माइनस 16. ठीक अछि. हेगला बढ़िया आगु. Write the minimum value of y2 where y is equal to y is equal to
sin square x into cos square x 2 रे मल्टीप्लाई कर देबे 2 स्क्वायर रे मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रे डिवाइड 2 स्क्वायर माने 4 तो न्यूमरेटर हे गेला sin square 2x divided by 4 this is y so what about y1 1 by 4 into 2 sin 2x into cos 2x into 2 so 2 into 2 will be 4 now y2 is equal to again differentiate करिए 8 y2 equal to y1 को पुणे थोड़े सिंपलीफाई करेंगे sin 2x into cos 2x ना so sin 2x into cos 2x को 2 रे मल्टीप्लाई करिए 2 रे डिवाइड करिए this will be sin 2x into cos 2x so this is 1 by 2 into this is y1 huh? 1 by 2 into 2 sin 2x cos 2x 2 sin theta cos theta sin 2 theta so that will be sin 4x now again y2 equal to 1 by 2 cos sin 4x derivative cos 4x into 4 so this will be 2 so this is 2 cos 4x 2 cos 4x then the minimum value cos x minimum value केता होची cos of 4x lies between -1 to 1 so 2 times cos 4x so -2 less than equal to 2 less than equal to 2 times cos 4x so 2 cos 4x minimum value -2 maximum value +2 so this is the minimum value मिनिमम वैल्यू ऑफ y2 फॉर y मतलब सेकंड डेरिवेटिव करिए सेकंड डेरिवेटिव जो फंक्शन है वो तार मिनिमम वैल्यू बाहर करिए राइट ना इवैल्यूएट e रेज टू mod x हां mod x माने mod x टा केते हलो 0 till 0 हां when it is positive it will become plus x when x becomes negative it will become minus x तो लिमिट टा को भांगी देबे break the limit from -1 to 0 plus 0 to 1 so between -1 to 0 mod x will become minus x and will between 0 to 1 mod x will become plus x so integration of e raised to minus x is e raised to minus x with a negative sign this is from -1 to 0 integration of e raised to x is e raised to x and this is from 0 to 1 and this is minus of e raised to minus 0 minus e raised to minus of minus 1 minus of minus 1 will be plus 1 plus e raised to 1 minus e raised to 0 so this is minus of e raised to 0 is 1 minus e plus e minus 1 so minus 1 plus e minus 1 so 2e minus 2 और 2 को कॉमन निकल e minus 1 okay next question this is one question and this is one more find the order and degree of the differential equation this differential equation order degree दरकार order degree जतल फाइंड करियो जे कोन करिवे प्रथम रेडिकल साइन को हटाइबे रेडिकल साइन माने पावर 3/2 अछि ना या को 3 करिवे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स सो दिस विल गिव यू d square y divided by dx square raised to 3 equal to here it is 1 plus dy by dx raised to 5 and the whole square so highest order differential coefficient is 2 so the order will be equal to 2 and degree is the exponent of the highest order term तो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है गेला 8 यार डिग्री है गेला 3 तो डिग्री विल बी इक्वल टू 3 डिग्री विल बी इक्वल टू 3 यू बढ़िया राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose कार्टेशियन इक्वेशन इज लुक कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन x plus y plus 2z is equal to 1 xyz को r बार लिख दो xyz is r बार डॉट x रो कोएफिशिएंट होची 1 माने i कैप y रो कोएफिशिएंट 1 माने j कैप z रो कोएफिशिएंट 2 माने 2 k कैप और राइट साइड हेगला 1 दिस इज हाउ टू राइट द वेक्टर इक्वेशन xyz जोठी देखिबे सेडु x r बार कर दो instead of xyz write r bar and for the remaining 1 1 and 2 the coefficients of xyz will take the position of a vector I cap j cap plus 2 k cap and right side value will be 1 this is one more question come to this will be dot of यहाँ पे dot है a bar plus b bar dot a bar minus b bar equal to 12 magnitude of a equal to 2 times magnitude of b then magnitude of a find करो so look this is a bar plus b bar dot product with a bar minus b bar is equal to magnitude of a square minus magnitude of b square now magnitude of a equal to 2 times magnitude of b so this is given as 12 so therefore this is 2 times magnitude of b bar minus magnitude of b bar here a square equal to 12 2 magnitude of b the whole square is 4 into b square minus b square
equal to 12, which is 3 times magnitude of b the whole square. This is equal to 12. So what about magnitude of b the whole square? Equal to 12 by 3, which is equal to 4, and magnitude of b bar equal to 2. Don't write minus 2. Don't write minus 2. So what is a bar? Magnitude of a bar equal to 2 into magnitude of b bar. So that is 2 into magnitude of b bar is 2, which is equal to 4. That is your required answer. Kaingi minus लिखवेनी वेक्टर मैग्नीट्यूड टा वेक्टर रो मैग्नीट्यूड टा कौन हम सब बेले पॉजिटिव केबे नेगेटिव लिखवेनी सत्यानाश हो जाएगा देखो सत्यानाश है ना हम कहूने ओडिया रे सब बुझलु तू ना तो परमंत्र आलू जहा बुझलु खंबो आलू केबे सेमती कर देबेनी सब गड़बड़ हो जिवो देखो 3 2 लैम्डा 5 4 7 3 2 8 is a singular matrix. What is this? Is a singular matrix. What do you mean by singular matrix? For a singular matrix, its corresponding determinant value will be always equal to 0. Corresponding determinant value कौन होगा 0. यार determinant जब बनेगा यार 0 आसे. तो determinant अभी आपको solve करी पारी. आपको solve करी कि lambda value नहीं क्या आसे. हाँ. किंतु solve करी जो lambda value आने method टा सेटा मोर नुह. सेटा मोर method नुह. मोर कौन गुटे नुआ method. कहीं MCQ कौन टी अलगा मुंडो खटेगा. कौन मुंडो खटेगा देखो. गोटे डिटरमिनेटर वैल्यू केतळे 0 हुए व्हेन द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट बिकम्स 0 व्हेन टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल जदि कोई डिटरमिनेंट रो दुईटा जाक रो या दुईटा कॉलम आइडेंटिकल हो जाए देन आंसर 0 हुए क्योंकि आंसर ऑलरेडी 0 है क्योंकि आंसर ऑलरेडी 0 है कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इसका पक्के से आइडेंटिकल होगा नाउ सर्च कौन से दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है कोटा दो रो या दो कॉलम कोई दुईटा रो या कोई दुईटा कॉलम ये आइडेंटिकल अच्छा देखो 3 3 फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम कंपेयर कर 2 2 ऑलरेडी आइडेंटिकल अच्छी जदि लैम्डा रा वैल्यू 8 हे गला जदि लैम्डा रा वैल्यू 8 हे गला तो ए दुईटा आइडेंटिकल हे जिवे आइडेंटिकल हे गले कोन हो डिटरमिनेंट वैल्यू टा 0 हे गला काहे कि डिटरमिनेंट ऑलरेडी 0 अछि द हैज टू बी आइडेंटिकल एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स मस्ट बी आइडेंटिकल तो आइडेंटिकल के तळे when lambda becomes 8 ठीक है जी बढ़िया one more question the question is f is 1 comma a f is 1 comma a 2 comma b 3 comma x 4 comma d g is a comma x b comma x c comma y d comma z now find fog रे प्रथम का ऑपरेट करिवे g को ऑपरेट करिवे देखो केमती ए रो इमेज होची x रो कोन एठी इमेज अछि कि x रो कोई इमेज नहीं देयरफॉर FOG इज नॉट पॉसिबल नाउ कम टू GOF प्रथम कोन ऑपरेट हो f ऑपरेट हो 1 रो इमेज होची a और a रो इमेज हला x तो 1 रो इमेज हेगला x करेक्ट ना देखो प्रथम के का को ऑपरेट करिवे a को जेतले a को ऑपरेट करिवे गोटे मिनट गोटे रफ करिकी प्रॉपर्ली करिवा ठीक अछि ना काई ना एटा हमें आगो FOG पे करथिले ना FOG तो एग्जिस्ट करलानी नाउ लेट अस मूव टू GOF बाबा कोन करछन देखो GOF रे प्रथमे f को ऑपरेट करिवे 1 गोस टू a एंड a गोस टू x देयरफॉर 1 गोस टू x वन एलिमेंट 2 गोस टू b गोस टू x तो 2 गोस टू x 3 goes to x and there is no element where x goes yeah now 4 to d and d to 4 to d and d to 4 तो 4 comma x तो एक्सिस्ट हो चुकी देख ले देखो पिला 80 के करेक्शन है 3 to x and this is x to y this is x to y so 3 to x and x to y मतलब 3 to y so GOF is this and FOG is not possible why because FOG is not defined next question look question of cos inverse 3/5 now ये जो cos inverse अच्छी या को sin रे कन्वर्ट करियो हां कैसे कन्वर्ट करिए लेट cos inverse of 4/5 will be equal to theta तो व्हाट अबाउट cos theta
cos theta equal to 4 by 5. Make a triangle to get sin theta. Let this will be theta. So cos theta will be adjacent upon hypotenuse. तो इटा है गला 3 by Pythagoras theorem. तो sin theta कहता है गला sin theta becomes 3 by 5. So theta becomes sin inverse of 3 by 5. So theta को कौन consider करते ले cos inverse 4 by 5. तो replace cos inverse 4 by 5 by sin inverse of 3 by 5. So this is cos inverse x plus sin inverse x is equal to pi by 2 by a formula. So cosec pi by 2 is equal to 1. So 1 is your answer. 1 is your answer. Now x between 2 pi by 4. 2 pi by 4 माने कौन pi by 2 ना. x belongs to 2 pi by 4. 2 रे कट करिए pi by 2 रू pi. And y is equal to mod of cos x plus mod of sin x. So dy by dx pi by 2 रू pi कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट pi by 2 रू pi रे सेकंड क्वाड्रेंट आउ सेकंड क्वाड्रेंट है cos होची नेगेटिव तो माइनस ऑफ cos x sin होची पॉजिटिव तो प्लस ऑफ sin x. Now find dy by dx. So dy by dx equal to minus cos x रो डेरिवेटिव होची minus sin x तो ये प्लस है गला and derivative of sin x will be equal to cos x. This is the answer. Let's move to the next question. Write the least value of this increases in 1 to 2. So this is f of x. F of x equal to x square plus ax plus 1 is an increasing function. So f dash x must be greater than 0. So 2x plus a greater than 0. 2x plus a will be greater than 0. So 2x will be greater than a or a greater than 2x. A greater than 2x. You need the value of a ना. तो a को greater than 2x कर दो. Which कर दो a को greater than 2x कर दो. So this will be a greater than minus 2x. And x lies between 1 to 2. And since x belongs to 1 to 2, the least value of x will be 2. So greater than minus 2 into 1, and that is greater than minus 2. So least value of a will be minus 2. Next, integration of x cube divided by x cube plus 1. X cube plus 1 रो derivative होची 3x square. So integration of x square divided by x cube plus 1 into dx. Numerator और denominator को 3 रे multiply कर दो. Multiply by 3 and divide by 3. So this is 1 by 3 into तलर derivative ऊपर अच्छी. तो log of denominator x cube plus 1 plus c. t नहीं की भी कर करिए. कैंसिल करिए. Let x cube plus 1 is equal to t. Derivative of x cube is 3x square into dx equal to dt. The numerator is dt, denominator is t. आगे 1 by 3. Okay. Integration of 1 by t will be equal to log of mod of t plus c. So this is equal to 1 by 3 into log of mod of t. And what is t? T will be equal to x cube plus 1. एमती भी कर पारि डायरेक्ट भी कर पारि तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि log of denominator. If numerator is the derivative of denominator, then what will be the derivative? What will be the integration? Log of denominator. Okay. Next, find the differential equation whose solution is this. How many constants are there? 3 arbitrary constants are there. Differentiate thrice. 3 arbitrary constant is to 3 thorough differentiate करिवे. So this is a into derivative of x square will be 2x plus b into x रो derivative 1 और c रो derivative 0. Now second order derivative d square y by dx square equal to 2a and d cube y by dx cube will be equal to 0. This is the solution of the differential equation. Next question. Find the projection of the line segment joining. Let this will be a and this will be b. Now let us find out a b bar first. 3 minus 1. 3 minus 1. b minus है ना. So 3 minus 1 will be 2 into I cap. 2 into I cap. Then 2 minus 3. 2 minus 3 will be j cap. 4 minus of minus 1 will be plus 1. 5 into k cap. On z axis. What is z axis? Z axis is represented by k cap. Projection मतलब ab bar dot k cap divided by magnitude of k cap. ab dot k cap. 80 k रो coefficient 5, 80 k रो coefficient 1. So 5 into 1 will be 5. Divided by k cap is a unit vector. So magnitude is 1. So 5 upon 5 will be equal to 5. Look, a given, b given. What is the direction of a? Direction मतलब
unit vector. So look, a2 minus 2 0 0 plus of minus 2. तो a bar minus b bar plus 2c bar. a को b को माइनस करिवे 2 टाइम्स c को मल्टीप्लाई करके ऐड करिवे. तो देखो 2 minus 2 0 हो गला 2 into minus 1, so minus 2 into I cap. Minus 2 minus 3 will be minus 5 and this is 0. So minus 5 into j cap. Then 1 minus 6. 1 minus 6 is minus 5. 2 into 2 will be 4. Minus 5 plus 4. Minus 5 plus 4 will be minus k cap. This is the vector. कितना आएगा वेक्टर टा? वेक्टर टा असला minus 2 I cap minus 5 j cap minus k cap. This is the vector. Now the unit vector. Unit vector मतलब यार मैग्नीट्यूड बाहर करे. मैग्नीट्यूड केमती बाहर करे? I रो कोएफिशिएंट minus 2 रो स्क्वायर 4, j minus 5 रो स्क्वायर 25, minus 1 रो स्क्वायर 1. So this will be root 30. Then the direction of this is unit vector. Unit vector is vector by उसका खुद का magnitude. Vector is minus 2i minus 5j minus k divided by the magnitude. What is the magnitude? Root 30. This is the direction of a minus b plus 2c. Direction of a bar minus b bar plus 2 times c bar. This is the direction. Find x and y if this equal to this. Multiply कर दो 1 into x plus 3 into y. 2 into x minus 1 into y. And this is equal to 4 1. 4 1. So there are two equations now. X plus 3y equal to 4 and 2x minus y is equal to 1. Let it be equation 1 and equation 2. So equation 1 को as it is रखिए किसी करीबे नहीं. So this will be x plus 3y is equal to 4. Equation 2 को 3 रे multiply कर दो. So that 6x minus 3y will be equal to 3. Add कर दो. So 7x is equal to 7. So x is equal to 1. When x is equal to 1, कोई भी using in equation 1. Equation 1 रे substitute कर दो. X is 1 plus 3y is equal to 4. So 3y will be equal to 4 minus 1 is 3. Therefore y is also equal to 1. So therefore x comma y. X is equal to 1 and y is equal to 1. And this is the required answer. कौन कली बुझला? एकदम सिंपल. मल्टीप्लाई करके दीटा इक्वेशन बाहर कले साइमल्टेनियसली सॉल्व कर हेगला. तो एमती हम सॉल्व करबा. काली के आ गोटे वीडियो नहीं आसी. छोटिया छोटिया वीडियो करिया. काली के आ गोटे. आज अराउंड 30 MCQ सॉल्व कली. नेक्स्ट लेक्चर आउट 30 MCQ सॉल्व करिया. Out from tomorrow onwards, I am bringing topic wise revision. Remember, topic wise revision. Topic wise revision will be coming. Topic wise revision. And this will include 1 mark questions. All important questions from that particular chapter. 3 mark questions as well as 5 mark questions. And the order of the chapters are like, first chapter will be your continuity and differentiability. Continuity and differentiability. All the important questions from textbook. All important questions from textbook and plus some reference books. Then second one, application of derivative. Third video will be indefinite integration. Fourth will be definite integration. Fifth will be application of integration, which is your area under the curve. Then 6 differential equation. तो एतिकी चैप्टर कला परे आमे आसबा वेक्टर्स. रोज गोटे गोटे वीडियो आसबो. सब प्रीमियर हम. वेक्टर्स. देन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. देन आमे आसबा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स. जदि टाइम मिलला एति पर्यंत आसबा. एटलीस्ट एतिकी तो आमे खत्म करबा. ए सब इंपोर्टेंट चैप्टर. ए सब इंपोर्टेंट चैप्टर आमे खत्म करबा. आपन गोटे काम करिवार अछि. कोन काम करिवे? वीडियोटा को जत्ते पारिबे सेते शेयर करिवे. आउ जत्ते बेले आपन वीडियो देखुचंदी सेते बेल आइकन टा को प्रेस करियो और सब्सक्राइब करिवे. जमती बेल आइकन प्रेस करिवे हमर कंटिन्यूटी आउ डिफरेंशिएबिलिटी रो वीडियो आपन नोटिफिकेशन आसीबो. एओडी रो नोटिफिकेशन आसीबो. इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन नोटिफिकेशन. सब चैप्टर जत्ते जत्ते आमे वीडियो बनै चालिबु हमर टीम आ मु सब वीडियो आपन पाखरे पहुंचो. ठीक अछि. तो पढुतांतु.
परिश्रम करता पढ़ुता अंक कषा प्राक्ट करते अंक कषा हाँ ओडिशार भिटामाइटर जो प्राक्ट से छाड़े आम अंक प्राक्ट करूँ आम अंक कषुचे राइट वी आर वेरी गुड इन मैथ्स एंड वी हाँ रियली डोंट नो दैट आम मैथ्स रे बहुत भल किंतु आम निजे जान से कथा कहीं हनुमान भी जान नी से जाकि सीता को ठाप कर लंका आसपारे किए परिचय करला जाम्बवान जाम्बवान निजर क्षमता निजर शक्तिर परिचय करते आ मु तुम से जाम्बवान हो तुम हनुमान हो लंका जीतवे आम आमर लंका कोटा मैथ रे 80 ରୁ 80 आने या 100 ରୁ 100 आने से आमर गोल एंड वी टुगेदर विल अचीव इट सो लेट्स लर्न विथ कृष्णास मैथ्स आउ मुझे सब बेले कहूँ आस पढ़ा आउ देश गढ़ा ये स्लोगान सहित आज आम वीडियो बंद करछे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो नहीं आसबी टिल देन बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।